Okay. Now, friends, are you able to visualize my screen over here? Yes, sir. Okay, fine. Yes. So, in the previous lecture, we have discussed about how to draw the ion carbon diagrams, what are the different phase are included or it is represent in ion carbon diagram, uh, how that the different phase transformations occurs at what temperatures and through the which invariant reactions. There are the four invariant reactions: eutectoid, eutectic, peritectic, and monotectic reactions. There are the five different phases. There is the alpha ferrite, austenites, delta ferrites, cementites are and pearlites are represented in the ion carbon diagram. Now, friends, based on this ion carbon diagram, we can group the alloy. Okay, alloy तो है ये. This diagram is shown the alloy, right? An alloy of what? Ferrite and carbon. So in this particular diagrams, if we just classify the alloy in a particular groups, then how we can classify it? So based on the carbon percentage, you may classify the particular materials or alloy. For one example, if we just discuss that the up to the 2% carbon, okay, up to the 2% carbon, if we just talk about that, what is called the up to the 2% carbon, what we can call? Anybody can give me a hello? What it call? If we just consider the maximum 2% carbon, right? So the alloy which is formed by the range of the carbon percentage 0 to 2%, then it is denoted by what you may call it. Anybody just give me a answer. We have discussed in that very first topic or chapters of your syllabus or classification of the metallic material. At that time also we have discussed about that. Hello? Anybody having the answer? That is the known by the steel, right? So in the steel, as per this diagram, maximum 2% carbon is allowed. Okay, so that is called the steel over here. Now when the carbon percentage is including the more than the 2%, then it's terms as a cast iron. उसको क्या बोलते हैं? Cast iron बोलते हैं. Okay, so this is the maximum carbon solubility in the steel, right? As per the ion carbon diagram is the 2.06%. Okay, while then more than here, you just see that. Okay, more than 2%, it is denoted by the cast iron. Now, friend, as you know about that, in this particular ion carbon diagram, the point is a 0.83% is denoted by what, or it is designated by what? Anybody can elaborate the things? Hello? This 0.83% carbon content, it denoted for what? Which point it is represented by this percentage? This is known as the eutectoid point. This is known as the
eutectoid point. Now, if we just consider this one line that is called the 0.83% carbon. So, if you just consider that this line, okay, we have now discussed about that कि up to the 2% carbon, right, from the zero से ये जो है, this is denoted by the steel. Okay, this is denoted by steel. This is the steel. And beyond the 2%, beyond the 2%, what we'll have? Cast iron. Am I audible, friends? Yes, sir. Okay, nobody is answer me. I think I'm just I want to make the interactive session, but nobody is answering me when I just ask some small questions. Because if you just repeating this word, right, in the lecture only, then you will have some practice, right, to speak some metallurgical words or technical words, right. तो उसको आपको राइमिंग करना मतलब सीखना पड़ेगा. हाउ यू कैन बी जस्ट पुट इन योर यूजुअल लाइफ, right? We just use the lokhand word in our routine lives कि भाई from which material this component is made. तो आप बोलते हैं आ तो लोखंडનું છે. So you should not use this kind of word as an engineer, right? You have to use that these are made from the steel, these are made from the cast iron. ओके आप बोलते हैं कि कौन सा कौन से मटेरियल का बना है, तो बोलता है कास्टिंग का बना हुआ है. कास्टिंग इज द प्रोसेस, but cast iron is the materials. So these are the technical lackings in our routine lives and everything. Fine. So अभी ये जो green line मैंने बताया है यहाँ पे, ये जो है particular this spot is known as the eutectoid steels. Okay, अगर हम बात करें कि ये जो particular spot है वो steel को हमें identify करना है, so this is known as the eutectoid steels. It means that the steels which are having the carbon percentage 0.83%, then that kind of the steel is known as the eutectoid steels. If we are having the steels which are less than the eutectoid percentage carbon content, it means the carbon percentage is less than 0.83%, then this kind of steel is denoted what it is called by the hypoeutectoid steels. Hypoeutectoid steels. This is the classification. मैं आपको अभी बता रहा हूं जो, that is nothing but it is the group or classification. Hypoeutectoid steels. If the carbon percentage is more than the 0.83% up to the 2%, right? Here we just talking about the only steel. So that is why this is the hypereutectoid steels. It means it is the more than the eutectoid compositions. That is why this steel is denoted by hypereutectoid steels. A terminology जो है that you have to keep in your mind, because in industries, in your practical field applications, you have to be going through in this terminology. Okay, you should know about this terminology, and based on that you may have some estimation of the carbon percentage. Okay, somebody is just talking about ki bhai, this steel is the eutectoid steels, so you should keep in your mind ki bhai, eutectoid steel means there will be a carbon percentage is the 0.83%. Somebody is talking about that this is the hypereutectoid steel, so you should keep in your mind that hypereutectoid steel means the carbon percentage will be range in the 0.83% to the 2%. It is the theoretical,
बट प्रैक्टिकली की बात करते हैं तो मैक्सिमम 1.4% कार्बन कैन बी अलाउड इन अ स्टील. So that is why only that 0.83 to 1.4% carbon can be happen in that particular hyperutectured steel. If we just if we are having the hypoutectured steels, then our mind says directly that it may the carbon percentage in the range of the 0 to 0.83% carbon. Now if we just look after that cast iron, then again we are having the one point, it's called the eutectic point. ये जो मैंने अभी पिंक लाइन ड्रॉ किया है, this is the point 4.3%, or you can have the 4.2% in some materials, but that should not be a vast difference than 0.1% से ज्यादा या कम होना चाहिए. So here this is the eutectic point. So this cast iron at the point or at the this line, it is represented by the eutectic cast iron or eutectic pump position. Eutectic cast iron, because we are here talking about the cast iron only. Now if it's having the less than 4.3% carbon, then it is known as what friends? उसको कैसे बोल सकते हैं हम इसको? हेलो, it is known as hypoeutectic. hypo कम है ना, that is why it is called the hypo. It is less than 4.3%, that is why it's called the hypoeutectic. Is it clear? अगर कम है तो उसको हाइपो बोल सकते हैं, अगर ज्यादा है then it is called the hyper. This is the hyper. Now if it is the more than 4.3% to the 6.67%, then this kind of the cast iron is known about, it is the hyper eutectoid cast iron. This is called the hyper eutectic cast iron. So I think now you are clear by the what is the group of alloy. Okay, here we have just explained what are the group of the alloys in a iron carbon diagram. So generally basic jo alloys is represented by the iron carbon diagram is steel and cast iron, and it's further classified in a subcategories like hypoeutectoid steels, hypereutectoid steels, and eutectoid steels. Same way, the cast iron is also further classified in a eutectic cast iron, hypoeutectic cast iron, and hypereutectic cast iron. Is it clear, friends? Now, let's move toward the further. We have discussed this reaction and upper critical, lower criticals, everything. Okay, whatever I'm just explaining you right now, that is also it is the percentage. Okay, now let's move toward the how the transformation is occurred. हमने देखा कि स्टील जो है, स्टील के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, राइट, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे आयन कार्बन डायग्राम की मदद लेके. So friends, we are having the iron carbon diagram right now over here. Now let us move toward the transformations also. Okay, if we are having the this, okay, so let's think about that. ये जो है हमने ये जो आयन कार्बन डायग्राम जो है, आयन कार्बन डायग्राम में से हमने एक पर्टिकुलर पोर्शंस निकाला है. दैट पोर्शंस इज लाइक दैट कि यहाँ पे, राइट, ये हम पहले आयन कार्बन डायग्राम में जाते हैं, फिर वहां पे जाते हैं. सपोज दिस इज द 0.83%, जो ग्रीन लाइन वाला है. नाउ वी जस्ट हियर टॉकिंग अबाउट दैट द 0.4%. इट मींस we are having the particular spots like this. This is the 0.4% carbon content steel.
तो इट इज नोन एज व्हाट टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स, उसको कौन सा टर्मिनोलॉजी से हम बुलाएंगे, हाउ वी कॉल इट? हेलो, Hypoeutectoid. hypoeutectoid, very good. Now a hypoeutectoid जो है, this will be at this particular line. अभी मैं यहाँ पे एक ब्लैक लाइन जो है, डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. You may have this line. ये जो हमारा जो एलॉय जो है, ये लाइन के ऊपर होगा. Now what happen if we just increasing the temperature? तो यहाँ पे जो हमें फेराइट प्लस परलाइट मिलता है, अगर सपोज हम हीटिंग करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ये वे में होता है कि भाई फेराइट एंड परलाइट पहले होता है, देन अगेन यहाँ पे फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट हो जाता है, देन ऊपर हम ऑस्टेनाइट तक आएंगे. तो हम यहाँ पे भी बात करते हैं कि हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आयन कार्बन डायग्राम हमने यहाँ पे बाजू के फिगर्स में हमें आपको दिखाया है. यू जस्ट सी नाउ दिस इज वन. ओके, हमने ये जो है आधा यहाँ पे मतलब सिखाया है. देखिए, दिस वन पोर्शंस वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. सो यहाँ पे आपको दिखाने की यही मतलब बात कर रहा हूं मैं. अब देखिए, ये जो हमने ब्लैक लाइन जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको दिखाई देती है. दिस वन इज द ब्लैक लाइन, दिस वन इज द ब्लैक लाइन जो हमने ओरिजिनल आयन कार्बन डायग्राम में दिखाई है. ये जो है पर्टिकुलर ब्लैक लाइन है. दिस इंडिकेटिंग द 0.4% कार्बन ओवर हियर. नाउ यहाँ पे जो स्पॉट्स दिए हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्पॉट्स दिए हैं, तो ये जो है आपको दिस वन इज द वन स्पॉट्स. देन बिलो जस्ट लाइन, ये जो हमारा पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो हमारे ओरिजिनल आयन कार्बन डायग्राम में ग्रीन कलर की लाइन से जो दिखाया गया है, दिस वन इज द ग्रीन लाइन. ओके, तो ये जो है, ये लाइन के थोड़े नीचे, मतलब एकदम थोड़े नीचे ही, मतलब ये जो स्पॉट दिखता है, वहां पे क्या मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो यहाँ पे हमने दिखाया है. नाउ जस्ट अबव द लाइन, ये जो पर्टिकुलर लाइन है हमारा, ये जो है वहां पे इस स्पॉट के ऊपर कैसा फेज होगा, आप बता दीजिए अभी. फ्रॉम दैट आयन कार्बन डायग्राम यू मे बी प्रिडिक्टेड एट दिस टेम्परेचर what phase will be present, friends? Based on iron carbon diagram, I think you may explain which phase can be present over here, this point. So here they are having the austenites, and during that previous class we have seen that how the austenite is look after, right? It was look like the flat grains, राइट? एकदम बड़े बड़े कोर्स ग्रेन थे एंड फ्लैट ग्रेन दिखते थे हमें. सो हियर इन द स्क्रीन, आर यू एबल टू सी दिस माइक्रोस्ट्रक्चर फ्रेंड्स ऑफ द ऑस्टेनाइट्स? हेलो, Yes, sir. नाउ व्हाट हैपन व्हेन द टेम्परेचर इज ड्रॉप डाउन? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करते हैं. इट मीन्स ये जो हमारा टेम्परेचर था इज अराउंड 890 समथिंग था, 890 समथिंग था हमारा. सो 890 से हम जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करते 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 हैं, तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 810. तो 810 पे क्या होता है, जो ऑस्टेनाइट है यहाँ से, वो ऑस्टेनाइट के अंदर से कार्बन परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होने का ट्राई करता है. सॉरी, कार्बन परसेंटेज नहीं, फेराइट जो है वो ग्रेन बाउंड्री से वो मतलब अलग अलग होना स्टार्ट होता है. आप देखते हैं दिस इज द ग्रेन बाउंड्री ऑफ द ऑस्टेनाइट यहाँ पे, एंड आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है वहां से there will be at the grain boundary, it will be start to form the pro-eutectoid ferrite. क्या बनता है यहाँ से, फेराइट फॉर्म होता है. तो ये जो यूटेक्टोइड के पहले जो है, राइट, ये जो हमारा यूटेक्टोइड पॉइंट जो है, दिस वन इज द यूटेक्टोइड पॉइंट. तो ये जो यूटेक्टोइड पॉइंट से पहले एंड अबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसलिए मतलब वो जो फेराइट बनता है, दिस फेराइट इज नोन एज द प्रो-यूटेक्टोइड फेराइट. Is it clear, friends? Now what happened,
ये जो पर्टिकुलर फेराइट जो है वो अब जैसे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है 810 से मतलब स्टार्ट होता है, जैसे जैसे वो नीचे आने लगता है, इफ वी जस्ट थिंक अबाउट दैट, दिस इज द 723 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हम 723 से जस्ट ऊपर की बात करते हैं. So here, if we just think about that, this temperature line is indicating the 750. Suppose for one example, we just take the 750 degree centigrade over here. तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये जो 810 से स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे फेराइट परसेंटेज विल ट्राई टू ग्रो एट द ग्रेन बाउंड्री. सो हियर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्पॉट्स दिया है, दिस वन राइट, जो मैंने पिंक से एक स्पॉट बनाया, ये जो स्पॉट पे आप देखेंगे तो योर फेराइट कंटेंट विल बी नाउ एट द लुक्स एट द ग्रेन बाउंड्री. सो लाइक दिस, ये जो फेराइट है छोटे छोटे ग्रेन्स यहाँ पे मतलब फॉर्म होंगे. तो दिस काइंड्स ऑफ दैट फेराइट स्ट्रक्चर्स यू विल बी ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्ट्रक्चर. आप जब माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको लगेगा कि दैट फेराइट विल बी ऑक्यूपाई इन दिस मैनर्स. ओके, देन ये जो पर्टिकुलर जो है वहां पे हमें जो माइक्रोस्ट्रक्चर यहाँ पे मिलने वाला है, दिस इज द ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट. ये जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो जो हमने पहले से प्रिडिक्ट किया था आयन कार्बन डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर रीजन आयन कार्बन डायग्राम में देखेंगे तो वो रीजन के अंदर आपने पहले से उसको आइडेंटिफाइड किया था कि फेराइट एंड ऑस्टेनाइट के बीच में ये जो जोन है वहां पे ऑस्टेनाइट एंड फेराइट स्ट्रक्चर मिलेगा. But by this study, you are able to understand that the orientations or location of the ferrite grains at the grain boundary, okay, of austenite. जो austenite है उसके grain boundary के ऊपर ही ferrite, that is called the pro-eutectoid ferrite will be formed. Now, अगर next बात करते हम, then if we just look after that here, this is the green line. It's called the 723 degree centigrade line. ये जो मैंने जो एक 723 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लाइन यहाँ पे बनाया है, दिस इज कॉल्ड द 723 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज नोन एज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर. इट इज कॉल्ड द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर. फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रहिए. व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैं आपको अभी मतलब समझाने वाला हूँ, बट ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आप ध्यान में रखिए. दिस इज कॉल्ड द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इन आयन कार्बन डायग्राम. देन ये जो पर्टिकुलर जो लाइन है, दिस ए इंक्लाइंड वाला, दिस इज नोन एज द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर. अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये ध्यान में रहे आपको. ओके, तो ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो A1 है. ये जो है दिस इज कॉल्ड द A3 है. ओके, देन ये जो है पर्टिकुलर लाइन, दिस वन, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले, बट दिस इज आल्सो लोअर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, बट इट इज नोन एज द ACM लाइन. दैट इज कॉल्ड द ACM, सीमेंटाइट, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑस्टेनाइट टू सीमेंटाइट एंड मार्टेनसाइट फॉर्मेशन का है. तो ये जो है वो ACM है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले, बट ये जस्ट जानकारी के लिए. तो फ्रेंड्स, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों यहाँ पे बोला, व्हाई दे कॉल द क्रिटिकल टेम्परेचर? द रीजन इज दैट because particular this line is a responsible, or that is the temperature is responsible by the virtue of that the above just line, whatever the phase is there, is transformed into the different phase. It means यहाँ पे आप देख सकते हैं, you are able to see that above this line we are having the austenite. Now we just cool down it, right? We start the cool down it, so the temperature drop is there, and because of the temperature drop, this austenite has started to form the ferrite by this line. ये जो line है वहां से ferrite form होना start कर दिया, मतलब there will be start the transformation of the austenite to the ferrite. That is why it is called the critical temperature. And it is at the upper side of this line. That is why it is called the upper critical temperature. Now, this 723 degree centigrade line is again, they're having some transformation from the austenite to the pearlite, right? So, ये जो 723 degree centigrade line है, just above that line,
whatever the austenite is present, that austenite is totally transformed into the perlite. Okay, that is why it is known as the lower critical temperature and it is denoted by the A1. अब आप देखेंगे कि ये जो हमने 723 डिग्री लाइन है उसके ऊपर जो हमने बात किया यहाँ पे ऑस्टेनाइट एंड फेराइट था, बट जैसे भी ये लाइन जो क्रॉस होती है, व्हेन दिस लाइन इज क्रॉस, wherever the austenite is grain is observed in this particular figure, this austenite is converted into the perlite. And as you are knowing very well that the perlite is nothing but it is the alternate column, or we can say that it is the lamellar structure of a cementite and ferrite. So जहां पे भी यहाँ पे austenite grains you are observed, this is again transformed into the perlite and it is looks like a lining structure. Okay, तो आप देख सकते हैं कि this is the predicted microstructure at the below 723 degree centigrade line for the 0.4% कार्बन. आप देख सकते हैं ये जो है आपको जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ, if you just make the estimation like that, you will have the 50% perlite. आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% perlite है and 50% ferrite एरिया है. ओके, अप्रोक्सीमेटली आप मतलब इसके ऊपर से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं. सो उसका मीनिंग है कि यू कैन बी प्रिडिक्ट दैट व्हाट आर और व्हाट मे बी द माइक्रोस्ट्रक्चर इन दैट पर्टिकुलर स्टील्स. तो यहाँ पे हमने हाइपोयूटेक्टेड स्टील्स की बात की है. नाउ वी जस्ट नेविगेट टुवर्ड द आवर प्रेजेंटेशन. सो दिस इज वी हैव व्हाटएवर वी हैव डिस्कस राइट नाउ. नाउ इन माइक्रोस्कोप how the crystal microstructures or will be visualized in that particular structure. आप देख सकते हैं कि you are having this kinds of the microstructure. तो आप देख सकते हैं this one is the grain boundary of particular austenite structure. ये जो है वो पूरा austenite grain है. आप देख सकते हैं this one is the whole austenite grain, this one is the small austenite grain. आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो फेराइट परसेंटेज एंड परलाइट परसेंटेज है वो 50% 50% दिखता है. ओके, एंड अगेन दिस वन इज द ये थोड़ा डार्क ज्यादा दिखता है एंड हियर यू आर जस्ट हैविंग सम open line space are there. It means that in whatever the figures, if you are look like the dark regions, that is called the closed space perlite or फाइन ग्रेन परलाइट्स बोल सकते हैं. एंड जहां पे ऐसे मतलब लाइनिंग जो है वो थोड़ी अलग अलग छोटी छोटी दिखती है आपको, दैट इज नोन एज द कोर्स परलाइट और वाइडर स्पेस परलाइट बोल सकते हैं. So based on that, your properties may also be changed. Okay, so those who are having the finer grain structure, they are having the good amount of the strength, because it's restricted the movement of the dislocation. Okay, so it will be good for that. Now are you able to understand, friends? Hello? Yes, sir. Okay, is there any query in this phase transformation for the hypoeutectoid steels? No, sir. Okay, fine. So let's now move toward the eutectoid steels. So now you are having in mind that iron carbon diagram. हमने इतनी बार iron carbon diagram देखा है बारी बारी, तो now you should able to visualize the iron carbon diagram in front of your eyes while we just discuss about the eutectoid steels and hypoeutectoid steel and hypereutectoid steel. जब भी हम ये बात करते हैं, जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं कि भाई eutectoid steel means there should be iron carbon diagram in front of your eyes, right? You may just make the practice like this. So now let's discuss about the eutectoid steels. The eutectoid steels means the steels which are possess the 0.8% carbon. तो आप देखेंगे कि just above the eutectoid point, our materials having the structures like the austenite just above the 723 degree centigrade. यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो पर्टिकुलर फुल्ली ऑस्टेनाइट हो जाएगा. एंड जैसे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा बिलो 700
23 degrees centigrade, all the austenites will transform into the perlite. So that is why that wherever the austenites were present above the 723 degrees centigrade, at that particular place, right below 723 degrees centigrade, we are having the perlite microstructures. So that is why you may just tell them कि भाई 100% austenite at this particular point. So below this particular line, below this 723 degrees centigrade, 100% perlite is there. That is why you may answer them in the eutectoid steels at the room temperature, you will have the 100% perlite microstructure. So if you just look after these eutectoid steels in a microscope, you will have these kinds of microstructures. You will have this kind of microstructures. And perlite के अंदर क्या होता है? What is included in this perlite? So आप देख सकते हैं in this particular adjacent figures, right? Here the alpha cementite, alpha cementite, alpha cementite, alpha cementite, alpha cementite, ऐसे एक particular orientation के अंदर आपका microstructures होता है. ये जो lining है, तो black line indicating the cementites and white portions is indicating the alpha curve. तो ये जो austenite जो है, austenite के अंदर से generally क्या होता है, when we just cool down it, austenites के अंदर से धीरे धीरे कार्बन परसेंटेज जो solubilities जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है. Okay, so it starts to decreasing the carbon percentage and this cementite will be again separate from that. Okay, ferrite जो है वो अलग पड़ता है and cementite जो है वो अलग पड़ता है. तो ferrite and cementite जो है वो अलग अलग ऐसे कार्बन डिफ्यूजन होता है, इसकी वजह से आप फेराइट एंड सीमेंटाइट में वो फॉर्म होता है. So here the austenite is transformed into the perlite. Is it clear, friends? Hello? Yes, sir. Okay, fine, very good. Yes, sir. Okay, fine, good. So now we just move toward the next is the hypereutectoid steels. If we just think about that hypereutectoid steels, right? So let's again move toward the our particular figures and board के ऊपर आपको लेके चलता हूँ. I think we have discussed this only. Okay, fine. Now here I have just put this figure for the particular hypereutectoid steel के लिए. So friends, अगर हम again you just keep in your mind that the hypereutectoid steels is at the right hand side of the eutectoid steels. तो हम जो है वो यहाँ पे partly जो है वो figure again iron carbon diagram पे यहाँ पे draw करेंगे. आप देख सकते हैं कि हमने जो पोर्शन यहाँ पे आयन कार्बन डायग्राम का जो ड्रॉ किया है वो कौन सा पोर्शन किया है, दिस वन पोर्शन. वी हैव ड्रॉन दिस पोर्शंस ओवर हियर. ओके, सो नाउ वी जस्ट कंसीडर ओवर हियर दैट इज द स्टील्स व्हिच आर हैविंग द 1.2% कार्बन. आप देख सकते हैं 1.2% कार्बन जो है वो यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर ये जो येलो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ आयन कार्बन डायग्राम में, ये लाइन के ऊपर प्रेजेंट है. तो अब ये लाइन के ऊपर हम देखेंगे कि जो ACM लाइन दैट इज कॉल्ड द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर. तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के जस्ट अबव की बात करते हैं तो वी आर हैविंग द 100% ऑस्टेनाइट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ अगर हम बात करें कि एट द जस्ट बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन वी आर हैविंग द माइक्रोस्ट्रक्चर्स लाइक दैट. व्हाट हैपन दैट अगेन ड्यू टू द कार्बन डिफ्यूजन्स दैट देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कार्बन परसेंटेज जो है वो डिफ्यूज होता है उसके अंदर से, देन इट विल फॉर्म द प्रोयूटेक्टिक प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट विल बी फॉर्म ओवर हियर. प्रोयूटेक्टिक नहीं, प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट विल बी फॉर्म ओवर हियर. ओके,
तो ये जो है सीमेंटाइट जो है, यू जस्ट लुक आफ्टर एट द ग्रेन बाउंड्री ओवर हियर, ये जो ग्रेन बाउंड्री के ऊपर सीमेंटाइट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये जो एक्चुअली ये जो है वो व्हाइट कलर का होगा, बराबर, एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं दिस वन। नाउ जस्ट अबव दिस लाइन आप देख सकते हैं जैसे कि सीमेंटाइट जो है वो ग्रो होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है। ओके, तो ये जो ग्रो होता जा रहा है जैसे जैसे आप देखिए, एंड बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड दिस ऑस्टेनाइट इज अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू द पर्लाइट, ये जो है पर्लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस वन इज अ ऑस्टेनाइट, जहां पे ऑस्टेनाइट है दैट ऑल द ऑस्टेनाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द पर्लाइट। तो अगर हम बात करें कि हमारे ये जो 1.2% कार्बन कंटेंट स्टील्स जो है, if we just see the microstructures on the microscope, then we should have the structure like that, perlite plus cementite, perlite plus cementite. So now let's move toward the our presentations, and इसके अंदर हमारा structure कैसे दिखेगा। So you just see this, our structures will looks like this. Okay, you will have this lamellar structure of the cementite, ये जो है lamellar structure है, लंबा लंबा structure है, कोएक्सियल नहीं है, that is why it is called the cementite. अगर फेराइट है तो फेराइट जो है वो कोएक्सियल ग्रेन्स होंगे, उसका lamellar structures नहीं होगा, लंबा लंबा ग्रेन्स नहीं होंगे फेराइट्स में। So this is the that is called the, but ये जो है वो that is called the soft cementite है, particular जो cementite जो है at the cast iron उससे थोड़ा मतलब ये जो है वो soft cementite है। तो ये जो है white portion is the pro-ejected cementite, and perlite जो है यहाँ पे लेमिलर और लाइनिंग जो स्ट्रक्चर दिखता है, दिस ऑल आर द perlites, because wherever the austenite was there it is convert in the perlite below the 723 degrees centigrade. It means friends, based on this data you may predict which kind of the microstructures you will have, right, in that particular temperatures, in particular compositions of a carbon. So this is the work of a iron carbon diagram. The importance of the iron carbon diagram was there. Is there any doubts in this phase transformation of hypoeutected, eutected and hypereutectic, friends? कोई डाउट्स है इसके अंदर? नो सर। ओके फाइन, थैंक यू। नाउ हम अब आगे बढ़ते हैं प्लेन कार्बन स्टील के अंदर। What mean by the plain carbon steel? So the steel is a crystalline alloy of the iron, as we know and as we define also in our very first lectures. So the steel is the crystalline alloy of iron, carbon and several other elements. The properties of the carbon steel is depends primarily on the amount of the carbon it contains. Right? So basically steel का जो properties है, it is mainly depends on the percentage of the carbon. Now the plain carbon steel has a carbon content range from the 0.08% to the 1.5%. जनरली जो है ये क्लासिफिकेशन के अंदर 0.08 से 1.5% प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाया है प्लेन कार्बन स्टील के अंदर। Now carbon steel is made into the wide range of the product. Generally, if you just see in the market that the steel products are available in the various range, like angles, like channels, tubes, pipe in the square section as well as the round section. Then it available in form of the blooms. It's available in the form of the ingots. It is available in form of the sheets. It's available in form of the plates. Okay, in various cross sections also. So these are the available the form of the carbon steels, right, as per its applications.
Now let's discuss about the classification of the plain carbon steel. So the plain carbon steel is again classified based on the percentage of the carbon. So if the carbon percentage is in the range of the 0.08 to the 0.3% carbon, then it is known as the low carbon steel. Right? It's known as the low carbon steel, and it is also known as the mild steel. Okay, and short form is the MS. So in our routine life also we are using this common terminology that is called the MS. The MS stands for the mild steel, friends. So its mild steel is nothing but it is the low carbon steels over here. Now let's move toward the medium carbon steels. So medium carbon steels are having the carbon percentage in the range of 0.3 to 0.6% carbon. 0.3 to 0.6% carbon. Now, here if we just compare between the mild steel and the medium carbon steel, then if you are able to differentiate that the carbon percentage is less in a low carbon steel. So that is why it's having the good machinability, and the ductility and weldability is the good compared to the medium carbon steel. So जैसे जैसे the carbon percentage is increasing, the medium carbon steel is stronger than the mild steels. It's the less ductile than the mild steels, and still they are having the good weldability and the forgeabilities because they are having not such higher percentage of the carbon. Okay, now if we just move toward the next, then it is called the high carbon steel. High carbon steel means the steel which are having the more than 0.6 to 1.5% carbon content. ओके, तो 0.6 से 1.5% तक जा सकता है कार्बन परसेंटेज रेंज. That is why it is known as the high carbon steel. Then carbon percentage is increasing in that range, so that is why it possesses the good strength. मतलब higher strength is possessed by the higher carbon steels, and hardness is also higher as the carbon percentage increase. So friends, that is why this high carbon steels materials is used for the tools. Okay, various tools are made from the high carbon steels. Various structural steels are made from the high carbon steels. So this is the applications of particular plain carbon steels also over here. Now plain carbon steels is possess the other materials also, right? अदर देन द फेराइस एंड कार्बन. ये दोनों के अलावा अलग अलग उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं. सो वेदर इट इज एक्ट एज द इम्प्योरिटी और वेदर इट इज एक्ट एज द alloying elements. So based on that we can have some classification also. आप देख सकते हैं कि phosphorus is also one element and which affects the primarily the ductility and the toughness of the steels. So this will be act as the impurities. Matlab we should have the less amount of the phosphorus percentage. Okay, so the phosphorus renders the steel less tough and the ductile, while it increasing the brittleness. वो हमारा brittleness बढ़ाएगा. So it is unfavorable things. So we should eliminate or minimize the phosphorus during the extraction process. Next is the silicon. So the silicon is not that much harmful to the steels, but that particular silicon is impairing the hot and cold working and the machinability. Silicon we are just adding, so it can affect the hot and cold workability of particular steels. कैसे? Because fluidity जो है वो बढ़ा देता है silicon. Okay, so it affects the surface quality of the steel. उसका जो surface finish जो है, it is the good, while we can increase the percentage of the silicon. Now, if we are having the percentage of the oxygen, means oxygen is really a poison to the steel. Why? Because there are the certain ingredients is available in the steel which are react with the oxygen and it's form the oxides, and that oxide is
increasing the brittleness. Okay, it will be act as the one impurities, and that is why it reduce its toughness. Okay, so this oxygen is really poison to the steels. Again, we just move toward the hydrogen. So hydrogen atoms is diffused at the high temperature, and it occupies the interstices into the steels. Okay, and when it will be cooled down, when the steel is cooled down, this hydrogen is again joined, and it will be create the pressure at the interstices space. So it will be create the cracks from that interstices. So that is why it is also injurious to the steel, as it causes the embrittlement. Again, next is the sulfur. Sulfur is also trace element, means it is called the impurities in the steels. Okay, so it's increase the sulfur, then it's decrease the weldability and toughness. So we have to again remove or reduce the sulfur percentage into the steels. Then the tin is also considered as a residual element in the steels, so it's also increasing the embrittlement of the steels. So again, we have to remove the tins in the extraction process. Arsenic is also it's playing the major role in the rise of the temper embrittlement. Okay, temper and embrittlement का meaning क्या होता है? When we just increasing the heating of that particular steel, then it's reduce its ductility as well as the toughness. Okay, in some extent. So it also having some negative effects on the steels. Antimony also having the effect of the temper embrittlement. So you have to also remove or control the antimony percentage. And nitrogen, again, it is the harmful because it's from the nitrites and it's reduce the toughness of the steel. So friends, nitrogen, antimony, arsenic, hydrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, right? This all the compositions we have to control while the production of the steels, because it's having the adverse effect on the steels. Is it clear, friends? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you have to be control these alloying elements while you processing the steels. And the पॉजिटिव साइड, जो पॉजिटिव साइड हमें इंपैक्ट देते हैं इन द क्वालिटी ऑफ द स्टील्स, तो वो कौन से परसेंटेज है? तो कार्बन है, मैंगनीज है, अगेन सिलिकॉन की हमने अभी बात किया कि सिलिकॉन इज इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी, देन कॉपर इज आल्सो इंक्रीजिंग सम रेजिस्टेंस टू द एटमॉस्फेरिक corrosions, right? Then chromium, vanadium is also increasing its chromium is increasing its corrosion resistance, while vanadium is increasing its hardenabilities or strength. Nickel is also again austenite stabilizers. Okay, and it's produces the corrosion resistance. तो हमने जो चीज है प्रैक्टिकल के अंदर everything we have talked about this. Boron is again increase its hardenabilities. Lead increase the malleabilities. Tungsten is again increase the hardenabilities, and hardness properties is increasing. Molybdenum is again used for that increase the UTS or tensile strength. So these are the effect of the various ingredients which are favorable in the steels, and according to the requirements we are adding into the steels. Okay, and accordingly that the percentage of these alloying elements our steel is classified, like the stainless steels, high carbon steels or tool steels, die steels. Okay, this all the names is based on its ingredients and its applications. So we have now today discuss about that what are the groups of alloys and cast irons.
And in previous lecture, we have discussed also about the allotropy of ions. So, is there any doubts in these particular topics or today's lectures, friends? Hello. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Uh, okay. Okay. Good. Good. Anybody wants to speak something 2 or 3 minutes on today's lecture? What you have learned today? कोई एक बता सकते हैं आप? Me, there any students who can speak 2 minutes on today's lectures, please. What we have learned today? सर ग्राफ में आपने बताया कि Very good. यूटेटेड पॉइंट से जो 0.8% से लेस वाला है उसे हाइपोयूटेट पॉइंट, उससे ज्यादा यानी कि 2% तक गया तो हाइपर यूटेट पॉइंट, Very good. फिर 4.2% में यूटेक्टिक आता है Yes. और Good. उससे लेस यानी कि 2% तक यूटेक्टिक एलिमेंट्स Hypoeutectic. आता Very है good. हाइपोयूटेटिक, और उससे Cast iron. ज्यादा यानी कि 6.67% तक हाइपोयूटेट। Very good. Very good. Good. Then we Yeah. have discussed the transformation. Yes, sir. Okay. Okay. Thank We you. have discussed the transformation in the steels also today. Very good. Very good, Dhruvi. Fine. So, friends, यहाँ तक हम रखते हैं.